तुमकां सगळ्यांक आणि गोंयकारांक आयच्यान जे नवे वर्स सुरू जाता ताज्यो भरपूर शुभेच्छा। आज हांव हांगासून केरला वता। म्हजी केरळच्या राज्यपाल म्हणून नियुक्ती जाल्ली आसा आणि केरला वता आसतना आमचे गोंयचे राज्यपाल आणि म्हजे मित्र हे केरळचे आसात मूळचे, म्हणून तांकां एक मेळपाक येवपाचें आशिल्लें। तांचे कडल्यान केरळची म्हायती एक घेवप आनी थंय वतलो। एकंदरीत बरें वातावरणान थंय वता अशें तांचें म्हणणें। थंयचें वातावरण गोंयच्या सारकेंच आसा। गोंयांत जशें ट्युरिजम डेवलप जाल्लें आसा तशें आमच्या केरळाकय ट्युरिजम भरपूर डेवलप जाल्लें आसा। ताका गॉड्स ओन कंट्री अशें म्हणून एक तो टॅगलायन दिल्ली आसा, ताजो भरपूर फायदो जाल्लो आसा। आनी थंय कशा पद्दतीन ट्युरिजम डेवलप जाला, इकॉनॉमी कशी डेवलप जाल्या हाजेर तांच्यांनी म्हाका भरपूर म्हायती दिली। इतलेंच तांचे कडल्यान आयकुपाक आयिल्लो हांव। सर, नवीन वर्साची सुरवात पयलो दीस आनी तुमी केरळान वयता, कितें नवीन संकल्प? संकल्प होच, केरळ हांव आतां जशें गोंय म्हजें आसा तशें केरळय म्हजें। केरळ हो प्रदेश म्हजो आसा, इट इज अ माय प्लेस नाव। आनी म्हणटकच हांव थंय वतलो आनी थंय सरकार ज्या पद्दतीन काम करता त्या सरकारच्या पद्दतीन थंय काम करपाकच हांव तांच्या बरोबर रावन काम करप। हांव थंयसर वता तें कोणाक शिकोवपाक वता अशी म्हजी भावना केन्नाच ना। हांव राज्यपाल जरी जालो जाल्यार तांकां तुमी हें करात, तुमी तें करात, तुमी तें करा अशें सांगपाक वचना। ते जें काम करतात त्या कामाच्या भितर हांव तांकां मदत अशी म्हजी भुमिका आसता आनी म्हणून त्या पद्दतीन तांच्या बरोबर म्हजो वेव्हार आसतलो। केरळाचो आनीकय भरपूर मोठो विकास करप अशें हांव आयच्या ह्या दिसा एक संकल्प करता। सर, पयलीं तुमी हिमाचल गेले, मागीर बिहार गेले, आतां केरळा। आमचो देश केदो व्हडलो आसा तो ह्या निमित्तान म्हाका पळोवपाक मेळटा। केवळ व्हडलो आसा अशें न्ही, परंतु विविध संस्कृतीन, विविध पद्दतीन, विविध ऐतिहासीक भूमी, धार्मीक भूमी, सांस्कृतीक भूमी हें सगळें पळोवपाक मेळटा आनी ताजो म्हाका भरपूर फायदो जाला। म्हाका अनेक गोश्टी हिमाचल आसत, बिहार आसत थंयच्यान शिकपाक मेळ्ळ्यो। त्या सगळ्याचो उपयोग हांव केरळाक करतलो। आयलो न्ही गोंयांत। सर, गोंयांत राजकारण करतना तुमच्या नांवाचेर मुख्यमंत्री अजून रुमर्स असले काय खरें? आतां तुमकां कळ्ळें न्ही ते रुमर्स आसल्यो म्हणून। तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी गावली? म्हजी नियुक्ती केरळाक जाली हाजे वयल्यान तुमकां कळपाक जाय आसलें। त्यामुळे हो विशय तसो काय हाजेर आमी काय उलोवपाची गरज ना। असली सर ऑफर तुमकां? सर, एक हिंदी में सर। सर, आणि एक तुमच्या आता गव्हर्नर तुम्ही मेळ्ळे आता सर, तुम्ही गोंयाबद्दल गोंयाच्या सरकारच्या कामगिरी बद्दल कितें उलोवप जाला तुमचे आता? ना ना ना, राज्यपाल आनी हांव आमी केरळ बद्दलच उलयला। आमी जुने मित्रय आसात आनी हांगासरले राज्यपाल तांचोय हांगासरल्या सगळ्या हेचेर लक्ष आसा आनी हांवें ताचेर आनी कितें कॉमेंट्स आनी करपाक जाय किंवा तांची आनी म्हजी कितें हाजेर चर्चा जाली अशें बी ना। सर, गोंयांत फाटल्या दिसांनी जॉब स्कॅमाचो इशू खूब आसतालो आनी तेजेर सर तुमचो कितें? ना, म्हणजे काय म्हणपाचें ना। सर, ऐसा हिंदी में सर आज गोवा गवर्नर पास आए थे सर, क्या स्पेशल विजिट? गोवा के गवर्नर माननीय पिल्लई जी केरल से हैं और बहुत ही अच्छी सहयोग की बात है कि मैं केरल में जा रहा हूँ राज्यपाल के नाते। तो राज्यपाल के नाते जाने से पहले यहाँ से माननीय पिल्लई जी से बहुत कुछ सुनना चाहता था। वो वहाँ के हैं, उनकी वहाँ के बारे में जो जानकारी है, उनका पर्सपेक्टिव है, उनकी सोच है, उसको समझना चाहता था ताकि मैं अच्छे ढंग से वहाँ जाकर काम करूँ। इसलिए मैं उनसे मिलने आया था। उन्होंने भी बहुत अच्छे इनपुट्स मुझे दिए हैं, उसका मैं पूरा उपयोग वहाँ करके सर, 2 स्टेट का बिहार और अरुणाचल से आ गया और कैसे सर ये नहीं, बहुत अच्छा अनुभव दोनों जगह रहा। अपने अपने प्रदेशों की, यहाँ अपना देश इतना विविध है कि अपनी संस्कृति बहुत अच्छी होती है और सब जगह अनेक रंगों की संस्कृति है। जैसे हिमाचल में देखा, बिहार में देखा, अभी केरल में देखने जा रहा हूँ, तो इसका अनुभव बहुत अच्छा रहता है। हम अपने आप समृद्ध होते रहते हैं और इसका उपयोग अपने जीवन में बहुत अच्छा होता है। सर, नया साल के लिए क्या ये नए साल के लिए ही है ये। शुभकामनाएं। बहुत बहुत सब लोगों को, अपने गोवा प्रदेश के सभी भाई बहनों को मेरी शुभकामनाएं। केरल के
सभी भाई बहनों को, वहाँ के सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर कुछ स्पेसिफिक डिस्कस हुआ गवर्नर के साथ? हाँ बिल्कुल, वही तो स्पेशल That you would like to share some कुछ specific कोई issue जो No. What is that? I have shared with you whatever we have discussed. It is regarding the culture, the tourism, the people, and any advice that you gave? all the whatever he gave, it is an advice to me. It is because I know nothing of Kerala. So whatever he told me, that will certainly help me in functioning in Kerala, having good relation with everybody. Wherever I go, I don't try to have any confrontation with the government nor with the administration. So that will certainly help me. So it is a government who I am going there to just assist the government. It is not to guide and not to give any directions, nothing for that sort. Thank you. Thank you. तुमका सगळ्यांक देव बरें करूं.